Okay. Dipti, you are Dipti. What's your name? Avantika. Who has sent you? Like counselor name? You are for the zoology demo. Okay, fine. No issues. Chalo. So we are talking about Avantika. So everyone, obviously we are talking about the reproduction in the protozoans. Okay. Hello. Reproduction in protozoans. Okay. You are Dipti. Okay, fine. So reproduction in protozoans, we have completed the basic characteristics of all the phylums. Okay, of all the basic things like what is the coelom, okay, how the coelom is developing, what is the diploblastic layer, and how this is going to the triploblastic and metamerism. Okay, so finally we have started about the protozoans. We have already talked about that why the protozoans are not grouped into the animal kingdom, but it is a separate one from that. It's started from the metazoan. So first of all, what are the protozoans? Protozoans are simply the unicellular, the eukaryotic organism who have placed in the protista into the arithmetical classification. Okay? Any kind of organism need to increase their population, right? So because they are the very small, they are the unicellular. Okay, in the simple that all of the they do not have a specific cells. So that they do not have the specific digestive cells or the excretory cells or the circulatory or the respiratory cells. That means all of the important physiological activities are occurring inside that single unicellular organism. Okay? Reproduction is a basic process of the living organism. Okay. So how they are performing the reproduction. So on the basis of that, we have already classified. We have written about that asexual, sexual, right? Separately, हमने लिख लिया ना? We have written about that. वो हमने graph बना लिया ना? Sexual and sexual का. ठीक है. So reproduction is mainly of your two types. ठीक है. So first is your reproduction में asexual reproduction. We have made that tabular form, right? हाँ. So that is your asexual reproduction. And second one is the sexual reproduction. Aniket, what is the basic difference between the asexual and the sexual reproduction? Pranav, Justin, Pranav आज भी नहीं आएगा? चलो, go on. Anything else? Is that core difference, Aniket? Exactly. Even in the sexual reproduction, the one cell also involved. Right? So we have talked about in the sexual reproduction, sometimes what happens, the different nucleus is going to be performed like different two gametes. Okay? So what is the basic difference about the sexual and sexual reproduction? Here, all of the things, everything is performing in the single cell. Okay? Even in that asexual reproduction, everything is going to perform in the single cell. Sexual reproduction may either it will have the two cell or it will have the two nucleus, even in the single cell. Okay? So that is the basic difference of that sexual and the asexual reproduction. So when we talk about that asexual reproduction, इसमें कोई parent involved नहीं हो रहे. That means suppose that, we know that the type of division, any kind of cell divides mainly to two types. What are the two types, Himani? Mitosis and meiosis, right? Okay. So we know that in the simple mitosis, what is happening? The cell is going to be divided like that. Karyokinesis followed by that cytokinesis in simple way. But when we talk about the meiotic division, what is happening here? There's a particular phenomena that is called the crossing over. That means two different kind of cell or the gamete is going, यहाँ पे कोई fusion हो रहा है in that metaphase, after that anaphase stage कोई भी fusion नहीं होता mitotic. अच्छा, that is why meiotic क्या होता है आपका sexual reproduction की recognition होती है, ठीक है? So we can say that reproduction is also done by the mitotic division, but in the unicellular organism, ठीक है? But in the unicellular organism. जैसे कि suppose that this is a paramecium. अच्छा, आप लोगों के syllabus में जब लोग protozoans करते हैं, एक तो general features है. Then we have the four organisms, okay?
What are the 4 organisms in your syllabus? That is a paramecium, plasmodium, monocystis and leishmania. इन चारों ऑर्गेनिज्म में बेसिक डिफरेंस, जैसे प्लाज्मोडियम का आपका कंप्लीट लाइफ साइकिल पूछा जाएगा. पैरामीशियम इज वन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म जिसका आपका रिप्रोडक्शन पूछा जाता है, बोथ सेक्सुअल वन एंड द असेक्सुअल वन. ठीक है, दोनों ही पूछा जाता है. तो अभी हम यहाँ पे हमने इसकी पहले करा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में रिप्रोडक्शन वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट. तो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कनेक्ट दैट असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एंड इसी के साथ हम इसमें क्या कनेक्ट कर देंगे, प्लाज्मोडियम, सो दैट योर वन ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू बी कंप्लीट. ठीक है, मेक द हेडिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Make the heading asexual reproduction. It occurs by various method. It occurs by various method in the different protozoans. In the different protozoans. First, binary fission. First we're going to dictate, है ना. Just understand the statement. So whenever I'm going to explain that, पहले मैं लिखवा इसलिए रही हूँ कि अगर मैं समझाऊं तो आपके पास उसको देखने के लिए कुछ कंटेंट अवेलेबल है. ठीक है, राइट. Binary fission is a simple method of asexual reproduction. Is a simple method of asexual reproduction where there's a division occurs, on one nuclei or one individual, one nuclei or one individual, as a complete organism, as a complete single organism, into two daughter nuclei, slash individuals, full stop. These two daughter nuclei divide by the simple method of mitotic division. Therefore, both of these daughter nuclei have almost the similar chemical composition, with each other and with their parents. Next point. The division is resemblance. Next point. The division is resemblance. Is resemblance with mitotic division. Underline that, with mitotic division, as first point. First, the nucleus divide. Bracket में karyokinesis. Which is followed by division of cytoplasm. Cytoplasm. Bracket में cytokinesis. Next point. ये first था ना. Second point. The two daughter organism
the two daughter organism reduced as a result of binary fission who, who carry all the cytoplasmic organelles as in parent cell in equal number. Example, paramecium. Okay. Next point. The simple binary division. Yep. No, it's a normal point now, Daksh. The simple binary division occurs with respect to the body plans. In two planes. First, transverse binary fission. Transverse plane या transverse binary fission. Second, longitudinal binary fission. Binary fission. So whenever we have completed our graduation or the inter colleges, है ना, we know that. So what we know that any kind of thing, हमने देखी है transfer slides देखी है. Suppose that very basic example if we take, इसमें क्या है, process same है, but division का जो plane है, that is going to be different. Everyone knows this is a paramecium. Okay, this is a paramecium. So this is your macronucleus and this is your micronucleus. Okay, this is your macro and this is your micro. We know that even in that sexual reproduction, when we talk about in the paramecium, the macronucleus doesn't play any such very important role, right? अच्छा, transverse और binary का मतलब क्या है? Simple. एक में हमने transverse slide cut करी है ना, और एक में हमने longitude. एक में आपका macronucleus ऐसे करके divide होता है, दोनों में हो process जो हो रहा है वो दोनों में same ही हो रहा है. That is the first followed by the karyokinesis and then followed by the cytokinesis. चलो, write down. Transverse binary fission in paramecium. Make the heading. Transverse binary fission in paramecium. Transverse binary fission in paramecium. First, इसमें normal लिखो. During the favorable conditions, normal point about this content. During the favorable conditions, paramecium commonly reproduces. Anushka, did you submit your copy? To whom? To them only. I didn't get your copy. I have the copy. I have copy of Shriram, Aniket, Jamshad, and Pranav. I didn't get your copy. आपने और श्राम ने साथ में सबमिट करी थी, अलग अलग. You gave to me. You gave to separately. I'll check it again because I didn't get your copy. श्राम बहुत अच्छा आंसर लिखा, impressive. Right on. Because सबकी कॉपी हो गई थी, आपकी नहीं हुई थी. I thought कि मेरे पास है, फिर I thought कि मैंने देखा मेरे पास थी नहीं. एक बार मैं दोबारा चेक कर लूँ. Right. Next, during favorable condition, the paramecium commonly reproduces by transverse or horizontal binary fission. By transverse or horizontal
बाइनरी फिजन, हॉर्स एवोल्यूशन किसी ने नहीं लिखा, क्यों अनिकेत? कितनी बार क्लास में बताया था हॉर्स एवोल्यूशन? जमशेद, हॉर्स एवोल्यूशन तो क्लास में बताया था, फिर क्यों नहीं हुआ टेस्ट में? चलो राइट डाउन, which is, sorry to disturb, which is at right angles. कितना अच्छा लिखा है, वो भी मैंने देखा है. Reproduces by transverse or horizontal binary fission, which is at right angles, which is at right angle to the longitudinal axis, to the longitudinal axis of the body, of the body. Next point. देखो, any kind of, whenever we see any kind of organism, है ना, जब भी हम किसी organism को देखते हैं, suppose that if we see even now, that is why we have completed before that symmetry. Whenever we see any kind of organism, we see that longitudinal, even the human. You know, when we talk about the bilateral symmetry, we talk about that longitudinal division, that head and that limbs and everything. So actually, basically, हमें क्यों, why we need to talk about that कि transverse और जो horizontal fission है, that is at the right angle of that longitudinal axis. Because एक तो paramecium में first of all there is no symmetry. As such कोई symmetry नहीं, that's properly asymmetrical. But still the longitudinal symmetry, because of bilateral symmetry is the basis of the symmetry of all the types. ठीक है, तो ट्रांसवर्स जो इसका एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है. अच्छा फाइन, नेक्स्ट राइट डाउन. द नेक्स्ट पॉइंट पे पैरामीशियम स्टॉप्स फीडिंग, पैरामीशियम स्टॉप्स फीडिंग and its oral groove, paramecium stops feeding and its oral groove and buccal structure, oral groove and buccal structure start disappearing. Full stop. While this is happening, the micronucleus, underline that, the micronucleus starts dividing with all the stages, with all the complicated stages of mitosis, with the nuclear membrane remain intact, with the nuclear membrane remain intact. Jatan mein pani deo please. With the nuclear membrane remain intact. Next point. Micronucleus first increases slightly in size, and then number of chromosomes, Anushka, which stage is this in the cell division? In the overall cell division we have completed. Which stage is this? When the number of DNA content is increasing. Acha. Huh? S phase, no? So when we were talking about that G1, S, G2, right? So यहाँ पे we are talking about this M. But उसमें तो specifically S और G2 ऐसा हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, है ना? तो 36 से जो आपका DNA content है, which is going to be divided in that 2 equal daughter cells, वो इधर ही divide हो रहा है, because it has not taken the very long stage. ठीक है, तो that is your S phase. The amount of DNA is going to be double. क्रोमोसोम नहीं डबल होता है, ह्यूमंस में सिर्फ DNA कंटेंट डबल होता है. G2 means protein is forming. G2 has nothing to do with that amount or something like that.
उसमें नंबर कुछ नहीं होता, ये क्रोमोसोम होता है आपका सिंगल, राइट, इससे आपका एक डबल कॉपी फॉर्म, ये भी आपका एक ही क्रोमोसोम, दिस इज ऑल्सो वन क्रोमोसोम, दिस इज ऑल्सो वन, दिस इज ऑल्सो एन, दिस इज ऑल्सो एन, ठीक है, दैट अमाउंट ऑफ कंटेंट बिकम डबल, रिमेंबर। नेक्स्ट इसी में लिखो, माइक्रो न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड स्लाइटली इन साइज, देन क्रोमोसोम, कॉमा, numbering from 36 numbering from 36 to 150 to 150 150 36 to 150 ब्रैकेट में लिखो, depending on the various species of paramecium or organism, species of organism। अब जैसे पैरामीशियम कॉर्डेटम में दैट इज अराउंड 48 है ना, पैरामीशियम एनालम में दैट इज 111 112 आई थिंक एग्जैक्टली, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन, वैसे इन जनरल बस द थिंग इज दैट, देखो इसमें एक्चुअली बता रहा है, अच्छा जमशेद, व्हाई देयर इज अ नीड टू disappearing that cytostome or mouth or the oral groove, क्यों जरूरत पड़ रही है? That's the secondary reason. What is the primary reason? Aniket, what is the primary reason? That in the first stage, as the transverse or the binary fission is going to start, क्यों जरूरत पड़ रही है that disappearing of that oral groove or the mouth part? Anjali? Yes, that's the primary reason. Anjali? मैम ताकि सारी एनर्जी फर्टिलाइजर मतलब कि That's the secondary reason. Energy is the secondary reason. What is the primary reason? Anything you can divide into two equal half if that parent body will look like the equal thing, right? So that the formation or the presence or the location of the mouth, cytostome, oral groove is not maintaining that equal structure. तो सबसे पहले हम इसी को गायब कर देंगे, है ना? This is going to be disappear because यही तो two parts में divide हो रहा है. So if this is going to be disappear, then it will look like the very symmetrical structure. So whenever it want to divide, it can divide into equal part. अगर mouth होगा, right? And suppose that it has to be divided into the transverse division. So half of the mouth will go this side and half of the mouth will go this side, and that will make the complication, right, Anjali? Yes, ma'am. That is the thing. The first thing, it is disappearing of that oral groove or that the kind of that mouth part. ठीक है? Yes, ma'am. And ma'am, ये जो division है जो अभी आपने किया ये horizontal है longitudinal है? आप बताओ क्या कर रहे हैं हम लोग? We are talking about the transverse, ना बच्चों? So transverse division is at first line we have written that the transverse or the horizontal division is just the right angle, that is 90 degree of the longitudinal axis, that I've just explained. Why we have to consider the longitudinal? Because symmetry, whenever we talk about, it is the longitudinal one. ठीक है? तो उसके right angle पे divide हो रहा है ऐसे. चलो next. Each chromosome splits longitudinally. Next point. Each chromosome splits longitudinally to form two chromatids. To form two chromatids. ब्रैकेट में लिखो प्रोफेज स्टेज, ब्रैकेट में प्रोफेज स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, पेयर्ड क्रोमैटिड्स get arranged at its equatorial plane, ब्रैकेट में which stage? मेटाफेज स्टेज, ब्रैकेट में मेटाफेज स्टेज, which shows or indicate, which indicate the lining of division slash separation of organism transversely slash separation of organism transversely. Next point.
This is followed by separation of chromatids, at opposite poles, with elongation of nucleus, ब्रैकेट में एनाफेज स्टेज, लास्ट पॉइंट। अभी तक इसमें क्या है? सो इन दैट नॉर्मल माइटोसिस व्हेन वी टॉक अबाउट, सबसे पहले क्या होता है? सपोज दैट दिस इज अ सेल एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे? दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, है ना? माइटोसिस की या मियोसिस की पहली प्रोफेज स्टेज की जो स्टेज होती है, उसमें सबसे पहले व्हाट हैपेंस? सबसे पहले आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही डिसअपियर होती है। बट अभी हमने इस पॉइंट में लिखा है विद दैट इंटैक्ट पार्ट ऑफ दैट माइक्रोन्यूक्लियस। अभी भी माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा। सपोज दैट इफ आई वांट टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पैरामीशियम, तो अभी जब हम लोग सपोज दैट इफ यू वांट टू मेक द डायग्राम, तो द डायग्राम इज लाइक दैट, सब कुछ हो रहा है। बट नाउ दिस इज अ माइक्रोन्यूक्लियस स्टेज, माइक्रोन्यूक्लियस बिकम स्ट्रेच्ड, बट इसके अंदर जो क्रोमोसोम है दे आर गोइंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अभी तक एनाफेज स्टेज तक इवन द माइक्रोन्यूक्लियस की जो वॉल है, ठीक है, दैट इज रिमेनिंग इंटैक्ट। अगर यही रिमेन पहले खत्म हो जाएगी, सो डिवीजन तुरंत हो जाए। साइटोप्लाज्म डजंट हैव सो मेनी थिंग्स स्पेसिफिकली। So that is the difference between that normal mitotic stage and that specific mitotic division in that unicellular organism. देखा है ना हमने point that micronucleus की nuclear wall remain intact. We have mentioned that. ठीक है? Next point. At the last stage, micronucleus become very much elongated, ब्रैकेट में लिखो, telophase stage, bracket close, so that the two ends of the stretched micronucleus starts behaving like two daughter nuclei. Two daughter micronuclei. Two daughter micronuclei. ठीक है? Next point. Simultaneously, the macronucleus का as such कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें as such कोई न्यूक्लियस और वो सब नहीं है। ठीक है? Simultaneously, the macronucleus divides amitotically, that means simple, stretch होता है और divide होता है। Unlike the micronucleus, they do not have the chromosome or something like, they do not have to increase their number or double the chromosome number. ठीक है? Amitotically, first by micronucleus divide amitotically by simply elongated and constricted in the middle, ultimate And the two and constrictedly in the middle, constricted in the middle। फिर last point लिखेंगे ultimately the two daughter micronuclei and
two macronucleus and two macronucleus forms within the single parent, within the single individual, Next point. Two oral grooves begin to form in both anterior and posterior half, and original contractile vacuoles remain one in each half. Last point. मैम एक बार आप इसे रिपीट कर देना एंटीरियर के बाद से. Ultimately, two daughter micronuclei and two macronucleus form within the single individuals. Next point. Two oral grooves begin to form in both anterior and posterior half. And original contractile vacuoles remain one in each half. I'll show the diagram, don't worry. In each half. Done, Shivani? Yes, ma'am. And last point. In the meantime, the constriction furrow appears. Constriction. Furrow. सेल डिवीजन में हम लोग कहते हैं ना, साइटोप्लाज्मिक में, प्लांट में होता है और एनिमल में होता है. दैट सेल furrow appears near the middle of the body, which deepen and ultimately the organism with its cytoplasm divide, resulting to daughter paramecium. Full stop. Anterior one is called proter. And posterior one is called opisthid. Anterior one is called proter and posterior half is called opisthid. ठीक है, समझ आ गई? So whatever we have written the content, इसी को आपको डायग्राम में शो करना है. So simple, अगर if I'll try to explain that is a daughter, that is a proper paramecium. ठीक है? That is a parent paramecium. That is called that oral group. So whenever the general characteristics of the parameciums comes, or even the reproduction का अगर आता है, depending on the 10 marker or the 15 marker or the 20 marker. 20 marker का क्वेश्चन है, generally वो reproduction पूछता है, all the process of the reproduction, ठीक है? So in which you have to talk about that both asexual and the sexual one. 20 marks के क्वेश्चन में वो general characteristics भी add कर देता है, because it is your 4 pages. ठीक है? तो फर्स्ट पेजेस में आपको ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक कि आपको एक पर्टिकुलर आंसर में सिर्फ एक ही डायग्राम बनाना है. जितने पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं आपको हर पार्ट का डायग्राम बनाना होता है, एंड इट इज वेरी ऑब्वियस. सपोज दैट आपने इंट्रोडक्शन जो भी लिखा पैरामीशियम के बारे में, एंड हियर यू आर राइटिंग दैट्स योर फर्स्ट पेज. ठीक है, यू आर राइटिंग अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. जब आप उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो, प्लीज मेक द पैरामीशियम डायग्राम हियर टू.
इवन आफ्टर द रिप्रोडक्शन, इवन आफ्टर द सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन, आप रिप्रोडक्शन बता रहे हो तब तो आपको डायग्राम बनाने ही बनाने। बट किसी का भी अगर जनरल कहते से पूछा जाए प्रिया, इवन इन दैट नॉर्मल फाइलम, उस दिन आप ही ने पूछा था ना शायद ऑर्थोपोडा या किसी का भी जनरल फाइलम का पूछा जाए, आपको डायग्राम यहाँ पे इंक्लूड करना ही करना। ठीक है, तो पैरामीशियम का एक नॉर्मल डायग्राम। ठीक है, सो डायग्राम में एक्चुअली हो क्या रहा है, डायग्राम में हो रहा है ये। सो दैट इज द नॉर्मल कैरेक्टर, नॉर्मल ओरल ग्रूव। ये होता है पैरामीशियम का ओरल ग्रूव। यहाँ पे होता है एक माइक्रोन्यूक्लियस, यहाँ पे छोटू सा होता है एक माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, दैट्स अ नॉर्मल स्टेज। धीरे धीरे क्या हो रहा है, दिस इज स्टार्ट डिसअपियरिंग। तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो ओरल ग्रूव। इफ यू डू नॉट हैव द एनफ अमाउंट ऑफ टाइम, आप डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन करते चल रहे हो। ठीक है, ओरल ग्रूव स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। तो मतलब सेकंड डायग्राम जो है उसमें आपको दिखाना है कि दैट इज स्टार्टिंग द डिसअपियर। और धीरे से मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो क्या होने लगता है, स्ट्रेच होने लगता है। ठीक है, और ये आपका डिसअपियर हो रहा है। मैम ओरल ग्रूव्स मींस माउथ हो, हाँ, ओरल मीन्स माउथ। बकल का कैविटी हाँ, लाइक। बकल कैविटी और माउथ, दिस इज द माउथ, दैट इज कॉल्ड साइटोफाइज ओरल माउथ। यहाँ पे यही होता है, दैट स्टार्ट डिसअपियरिंग। देखो यहाँ पे हल्का हल्का डॉटेड स्ट्रक्चर आ गया ना, यस मैम। दैट्स ओनली ओरल ग्रुप। ठीक है, अभी ठीक है। साइमल्टेनियसली हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे साइमल्टेनियसली लिख लो दैट मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, अ माइटोटिक डिवीजन, अ माइटोटिक डिवीजन and micronucleus divides mitotically, mitotically divides। ठीक है, सेकेंड डायग्राम हमने क्या देखा था, दैट इट स्टार्ट डिसअपियरिंग, और वो बहुत स्ट्रेच हो जाता है, ज्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है। या तो यहाँ पे तो इसमें फरो तो इधर ही बनने लगता है, जबकि यहाँ पे हमने लास्ट में क्या लिखा है, एनाफेज में द एंड ऑफ दैट माइक्रोन्यूक्लियाई बिहेव लाइक दैट डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो दीज आर द एंड्स, आपको प्रॉपर दिखाना है, विच स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट माइक्रोन्यूक्लियस। और ये यहाँ पे आपका थर्ड डायग्राम में यू विल स्टार्ट शोइंग, अब ये हमें पता है दिस इज द एंटीरियर हाफ एंड दिस इज द पोस्टीरियर हाफ, दोनों जगह पे स्टार्ट इसका ग्रुप फॉर्म करना शुरू कर दो, छोटा छोटा सा। ठीक है, दैट इज स्टार्टेड फॉर्मिंग द ओरल ग्रुप ऑफ दैट डॉटर न्यूक्लियाई। तीसरा डायग्राम ये बन गया। फोर्थ में आप प्रॉपरली डिवाइड कर दो, बिकॉज हमने यहाँ पे ओरल ग्रुप तो दिखाई दिया स्टार्टिंग फॉर्मेशन दोनों साइड में, तो यहाँ पे आपका
जितना छोटा डायग्राम बनेगा उतना एग्जाम में जल्दी बनेगा, ठीक है। मैम यस बच्चों। मैम ए माइटोटिक डिवीजन कैसे होती है? ओके, सो इन दैट सब लोग एक बार कर लें, फिर एक्सप्लेन दैट। ओके ओके मैम। डायग्राम पेन से बनाने की प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है मार्बल चेंज, पेन से ही बनाना होता है। ये बहुत हुआ, ब्लैक और ब्लू पेन यूज कर लो मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस दिखाने के लिए, अदरवाइज डू द, अगर आप लोग नेमिंग प्रॉपरली कर रहे हो, डू नॉट इवन नीड टू चेंज द पेन। कभी भी ऐसा नहीं समझना है कि जूलॉजी और बॉटनी लिख रहे हो तो मल्टीपल पेन्स की जरूरत है, सिर्फ एक पेन चाहिए, पूरी कॉपी उसी से खत्म हो जाती है। इवन नॉट इन द हेडिंग, यूज अ सिंगल पेन। हाईलाइट करने के लिए वी हैव दैट अंडरलाइनिंग, एंड एक ये अंडरलाइनिंग होती है, एक ये अंडरलाइन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट कर दो, दैट्स हाउ यू हाईलाइट योर कीवर्ड्स और समथिंग लाइक दैट। आई श्रीराम समझ में? इन योर कॉपी यू हैवंट अंडरलाइंड enough while you have written a good introduction. Still, various times you have written a sentence name or something, but you haven't underlined it. Okay, so do that. आपने content लिखा है तो why not to show it? This time I have to see अनुष्का ने ज्यादा अच्छा आंसर लिखा और श्रीराम ने। Done? Quick, Daksh. एक बार डायग्राम, एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, लुक इनटू योर कॉपी एंड स्टार्ट मेकिंग द डायग्राम। एरो बनाओ हिमानी, शो दैट फ्रॉम वेयर इट इज गोइंग, ठीक है। दोनों डॉटर सेल है ना, 2 एरो बनाओ उसमें। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा दक्ष, इट विल नॉट कम एट वंस, ग्रेजुअली इट विल कम, है ना। अभी आपने स्टार्ट किया, नॉन कोऑर्डिनेट ज्वाइन ओनली ना, स्टार्ट किया तभी। अभी जब मल्टीपल डायग्राम हमने पूरी सेल साइकिल पेन से बना ली है, पूरा डीएनए रेप्लिकेशन वी हैव डन टू द पेन्स ओनली, ठीक है। वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है, कॉपी में एरर कर सकते हैं, है ना, वहां पे एरर नहीं करते। यस अंजलि, व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट द माइटोटिकली और अमाइटोटिकली, दैट मींस okay, so in that 2 types of nucleus, major, what is the use of the nucleus? That nucleus in that eukaryotic cells contain that genetic information with respect to the your DNA or the chromosomes, ठीक है। अच्छा, तो जब हम लोग when we are dividing that micronucleus, छोटू वाला जब nucleus divide करें, so that is even अभी नहीं, अभी next हम लोग करेंगे conjugation, तो even in that major जो fusion होता है, that constitute by that micronucleus। So इसमें क्या हो रहा है, देखो माइक्रोन्यूक्लियस कैसे डिवाइड, सपोज दैट दिस इज अ माइक्रोन्यूक्लियस, है ना, द कंटेंट ऑफ दिस डजंट मैटर, इट जस्ट स्ट्रेचेस एंड इट डिवाइड्स, दैट इज अ मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक है, डजंट मैटर एनीथिंग। बट व्हेन वी आर डिवाइडिंग, दैट इज कॉल्ड अमाइटोटिकली, no need to divide that equal content or that number of anything, but when we are dividing that micronucleus, छोटू वाला सा, ठीक है। So first what we are doing, because this is constituting your genetic information in the form of the DNA, and that is condensed form, the condensed form of the DNA, that is your chromosomes. Yeah, so what we are doing, so in that micronucleus form, this chromosome first, अब suppose that इसमें suppose that ऐसे कंसीडर करो 40 क्रोमोसोम है, अब अगर इसी 40 क्रोमोसोम्स को if I divide that, it will go into the 20 and 20, but what we know in that mitotic division, the parent, the number of the chromosome in the parent and the daughter should be equal। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिफोर इवन स्ट्रेचिंग और एक्सेस ऑफ दिस कंटेंट, पहले ये 40 की जगह 80 हो रहा है, ठीक है। द फर्स्ट द कंटेंट ऑफ दैट माइक्रोन्यूक्लियस इज गेटिंग डबल्ड एंड देन इट इज स्ट्रेचिंग लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड दैट माइटोटिकली डिवीजन। इसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं हो रही है,
the question in which the question I have asked in between, that what is this phase? This phase is called S phase, where the content, this 40 से parent में 40 था, daughter में भी 40 और 40 जाना होगा ना अंजलि? Yes ma'am. So that 40 जाने के लिए we must have that extra 40, तो वो आपका होता है mitotic division. और better से उसको इसमें mitotic बोलते हैं. When we talk about the cell division properly, we talk about the S phase, where the replication of the DNA occurs. जहाँ पे इस स्टेज से ये स्टेज आपकी आके बनती है, ठीक है? Yes ma'am. मैम मैक्रोन्यूक्लियस में क्यों नहीं हो रही है S phase? The macronucleus में ऐसा कंटेंट ही नहीं है. Okay, so we know that okay, in that normal cell we know that nucleus and we know that nucleolus, right? Yes ma'am. Do we have any particular contribution during the mitotic or the meiotic division of the nucleolus? No ma'am. What is the role of the nucleolus? The nucleolus is made up of your rRNA plus proteins. Protein. Yeah. So when something is like the helping machinery, then something get मतलब stored form है. आप storage house का use permanently नहीं करते, ठीक है? But direct contribution in maintaining the genetic in maintaining that genic balance उसमें role नहीं होता, है ना? Yes ma'am. Got it now? Yes ma'am. Sure. Macro. Yeah, this is a mitotic. No need to just double the content of the genetic information, DNA or something like that. Mitotic, this is proper, जैसे कि normal mitotic division होता है, right? In the normal mitotic division, G1S, G2M, that's it. उधर मत जाओ, sexual reproduction में. Meiotic में we are going from 2n to n. No, we are not doing that. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. यहाँ पे पेरेंट भी n है एंड डॉटर भी n है, या पेरेंट भी 2n है, डॉटर भी 2n. पेरेंट और डॉटर का नंबर इक्वल है ना? उधर अभी नहीं जाते हैं, वो कॉम्प्लिकेट. कहाँ 2n होगा? नो, दिस इज पहली बात तो n और 2n होता क्या? दिस अभी तो मैंने समझाया, अभी तो आई हैव शोन दैट. किधर गया? व्हाट आई हैव रिटन सेल बायोलॉजी में विल कवर, ठीक है? दैट हाउ दिस इज आल्सो एंड दिस इज आल्सो. ये है 2n आपका, दिस इज 2n एंड ये हम लोग उसमें करेंगे सेल बायोलॉजी में. दैट्स अ बेसिक कंफ्यूजन एंड मोस्ट ऑफ द बायोलॉजी स्टूडेंट. दिस इज द 2n बट दीज बोथ आर द n ओनली. यहाँ पे सिर्फ कंटेंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं हो रहा है. ठीक है दक्ष, विल डू दैट लेटर ऑन द क्लासेस. चलो नेक्स्ट. यहाँ तक यस मैम, बट मैक्रोन्यूक्लियस का तो रिप्रोडक्शन में रोल है. नहीं है अब माइक्रोन्यूक्लियस तो मैक्रोन्यूक्लियस में ही फ्यूज करता है ना. Who said that? Are you talking about the conjugation? No ma'am. Where are you talking about? Ma'am, conjugation. We'll do the conjugation, Anjali, then you'll have the solution of your whatever your doubt. Okay? Just wait, Okay, a little, have patience. Okay, chalo. Next. और उसमें भी as such कोई major role नहीं है. Fusion भी macro, they one of them behave like that. Macronucleus simply disappear. Start में वो disappear हो जाता है. We'll do that. ठीक है? Okay ma'am. चलो, write down next. देखो, so question comes like binary phasor or something like that. 10 marks का question आता है. So we do have enough content to write into the 150 words plus the diagram. Avantika, Deepti, we do have the enough content, right, Imani? Next. Multiple fission. Next heading. Multiple fission. That is also the type Ma'am? of... Yes, Bachcho? Ma'am, what was the furrow? वो extended form of nucleus ही होता है क्या बस? What? Furrow? Yes, ma'am. Furrow होता है, बच्चा ऐसे कंसीडर करो. बलून देखा है, वो लंबा वाला बलून होता है. Yes, ma'am. Okay, so when we talk about the division of the karyokinesis or the cytokinesis in the plant, अभी आपका क्या हो गया? एक सेल में जैसे 2 न्यूक्लियस, ठीक है? तो डिवीजन मेथड होता है. तो बलून को ऐसे करके रोटेट कर दो. So when you're trying to rotate anything, there's a beach में एक furrow, that's a kind of lining for the division. That is furrow. Splitting के लिए जो एक division होती है. Okay, ma'am. Next, multiple fission. Yes, Bachcho. What? नहीं, the second type है. लॉन्गिट्यूडनल में वो लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड हो रहा है. मल्टीपल फिजन में हम लोग करेंगे. मेनली आपका मतलब यही प्रोसेस जैसे कि हमने अभी तक इस लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यहाँ तक सेम होगा. द माइक्रोन्यूक्लियस बस उसमें सपोज दैट हमने स्ट्रक्चर ऐसे डिवाइड किया ना, फरो हमने बीच से बनाया है, उसमें फरो हम लॉन्गिट्यूडनल बनाएंगे. दैट्स इट.
Next, make the heading. Next, multiple fission. Right on. This is a type of asexual reproduction. This is a type of asexual reproduction where the Ma'am, single, yes, मैम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन ये सेम ही है. transverse binary fission and longitudinal binary fission में शिवानी, what is the difference in the words? The transverse and the longitudinal, or better say the horizontal. किसी suppose that ये कोई चीज है, there's one thing, अगर आपको ऐसे कट कर रहे हो, then it will call the transverse or the horizontal. But you're forgetting like that, it is called the longitudinal. Length के sense में अगर कट होती है, but the process will be gonna same. Furrow will be the different. मैम जैसे लाइक अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल वाली करी है तो उसमें हॉरिजॉन्टल वाली अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल नहीं करी है बच्चा, अभी हमने ट्रांसवर्स करी है ना. बट ऐसे अभी कट करा है ना, ऐसे कट करा है. देखो देखो हमने क्या लिखा है, the 90 right angle of the longitudinal axis is longitudinal axis के जो 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री, that right angle हमने ट्रांसवर्स करी है. मेजॉरिटी ऑफ 90% ऑफ द डिवीजन इज ट्रांसवर्स वन. लॉन्गिट्यूडनल पे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं है, बट द मेथड इज सेम, इज जस्ट द फरो विल बी डिवाइडिंग इन दैट लॉन्गिट्यूडनल, दैट्स इट. इसी ऑर्गेनिज्म को, ये है लॉन्गिट्यूडनल आपका. इसी ऑर्गेनिज्म का जो हम लोग डिवीजन ऐसे करने शुरू कर देंगे, यही माइक्रोन्यूक्लियस आपका लेंथ में होने की जगह विड्थ में हो जाएगा, और फरो विल बी गोइंग टू लाइक दैट. दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन. दैट्स इट. जस्ट flip your phone, that's it. Okay, yes ma'am. Multiple fission. It is a type of asexual reproduction where a single parent cell divides into multiple daughter cells simultaneously. Divides into multiple daughter cells simultaneously. Full stop. Next point. It involves repetitive division. It involves repetitive division of the nucleus followed by division of cytoplasm, followed by division of cytoplasm. Next point. Nuclear division is not immediately followed by cytoplasm. Full stop. At first the nucleus divide by series of binary fission, or simultaneously multiple fission, ब्रैकेट में लिखो या नेक्स्ट पॉइंट में लिखो मल्टीपल फिजन. नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीपल फिजन, that is aggregated content of the nucleus divide, aggregated content of the nucleus divide, and the body become multinucleated. The body become multinucleated. Jamshid, what is this stage called?
Aniket, what is this stage called? Yes, what is called? Syncytial. हाँ, syncytian. Write down. Bracket में लिख लो syncytial. Just bracket में syncytial. Comma, which is a common phenomena. Which is common phenomena in foraminiferans. In foraminiferans, radiolarians. हम लोग ये सारे नाम लिख चुके हैं, राइट? आपके डिफरेंट प्रोटोजोआस के एग्जांपल में, ठीक है? कहाँ पे बच्चा? ये डी ही है। हाँ, रेडियोलेरियंस, फोरामिनिफेरेंस, रेडियोलेरियंस, स्पोरोजोआस। स्पोरोजोआस आपके सिलेबस में कौन सा स्पोरोजोआ है? प्लाज्मोडियम। यस, यहां से भी करेक्ट द प्लाज्मोडियम का कॉन्सेप्ट टू, ठीक है? अवंतिका, व्हाट इज प्लाज्मोडियम? मलेरियल पैरासाइट, ठीक है? प्लाज्मोडियम, ब्रैकेट क्लोज, प्लाज्मोडियम and also some mastigophorans, some mastigophorans. ठीक है? Next, normal point. This process receives different names. Ma'am, receive. हाँ बच्चा, receive. This process receives, या having, कुछ भी लिख लो, different names according to their life cycle. First, Schizogony, SCHIZONY, Schizogony. कुछ याद आ रहा है इससे? किसी ने अगर कुछ करा हो प्लाज्मोडियम का? What is that? Yes. Okay. So कहां पर होती है लिवर? So plasmodium is your, everyone just connect that. आपका जो PYQ है उसमें आपका 10 मार्कर क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन इस चाहिए, साइजोंट स्टेज. That's the only question. Ab you guys do not know, suppose that anything about that. Okay, so what it is asking? It is asking your plasmodium का. अच्छा, so now literally talk about वहां से, क्योंकि वहां पे important हो जाएगा, ठीक है? मल्टीपल फिशन को आपको समझने के लिए प्लाज्मोडियम को जानना बहुत जरूरी. So plasmodium is your malarial parasite, ठीक है? जो क्या कॉज करता है? malarial parasite. So what is the other thing we know about that? This is your digenetic parasite. What is the meaning of that? Yes, very good. That is your digenetic. That means इसके जो होस्ट है वो 2 है, ठीक है? कौन कौन से 2 होस्ट हैं? Human and mosquito. ठीक है? अच्छा. Why the 2 people are required? Why the 2 person are required? अच्छा. What is the specific difference between that 2 human and mosquito life cycle? Anyone? मैम एक में सेक्सुअल और एक में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. बताना है किसमें सेक्सुअल है, किसमें असेक्सुअल है. मैम मैन के अंदर एसेक्सुअल होती है आई थिंक, और मस्किटो के अंदर सेक्सुअल होती है. ह्यूमन में आपकी कौन सी स्टेज होती है? असेक्सुअल, ठीक है? मतलब प्लाज्मोडियम मुझे पढ़ाना नहीं है, थैंक यू गाइस, ठीक है? मस्किटो में आपकी होती है सेक्सुअल स्टेज, ठीक है? अच्छा, सो व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द असेक्सुअल सेक्सुअल? विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ द पेरेंट, है ना? विदाउट एलम, ठीक है? तो जब प्लाज्मोडियम होता है, जब आपके यहाँ पे लिवर में पहुंचता है, सपोज जब आपका स्टेज आ गया, आपका सिंपल 10 मार्क का क्वेश्चन आ गया, साइजोंट स्टेज, जो कि वी डिस्कस इन द पीवाईक्यूज, ठीक है? अब जब आपका पीवाईक्यू डिस्कस में आ गया, तो अगर अब उसके आप क्वेश्चन में क्या प्लाज्मोडियम के बारे में बताना नहीं शुरू कर दो,
है ना. सो अभी हमने जो लिखा, व्हाट इज साइजोजोंट स्टेज. साइजोजोंट स्टेज इज अ टाइप ऑफ, क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction through that multiple fission. इंट्रोडक्शन हम लोग को पता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इट इज अ टाइप ऑफ asexual stage through that multiple fission where the multiple time karyokinesis occur after that which is followed by the cytokinesis. Cytokinesis, nucleus division and that, ठीक है. आपने छोटा सा स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन लिखा. Then you are going to talk about the cytosol stage in the plasmodium. एक्चुअली प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल का एक पार्ट ही पूछ रहा है, ठीक है, बट वो स्पेसिफिकली मलेरिया वहां पे मेंशन नहीं करेगा. सो यू हैव टू नो दैट व्हाट ही इज आस्किंग, है ना, व्हाट इज एग्जामिनर इज आस्किंग, ठीक है. समझ आ गया. तो उसमें क्या होता है, सपोज दैट दिस इज अ प्लाज्मोडिया, है ना. पैरामीशियम में बहुत रेयर है, स्पोरोगोनी स्टेज में होता है मल्टीपल फिजन. इसमें क्या होता है, ये एक सेल है, इसके पास एक न्यूक्लियस है. सो जब ये लिवर में जाता है, सो वी नो दैट ह्यूमन लिवर हैव द मल्टीपल न्यूट्रिशन, बहुत अच्छा खासा न्यूट्रिशन है उसके पास, राइट. और नंबर इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है. वो क्या करता है, लिवर से बहुत सारा न्यूट्रिशन ले लेता है. अब उसकी जो सेल होती है वो स्वेल्ड अप हो जाती है, न्यूक्लियस को सब कुछ मिल जाता है. अब यहाँ पे वो उसको इतना ज्यादा, अच्छा न्यूक्लियस डिवाइड करने में ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस है या साइटोप्लाज्म डिवाइड करने में ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस है. Nucleus is a much more complicated process to divide, right? Even when we talk about the karyokinesis and the cytokinesis, karyokinesis process takes a very long division, right? अच्छा, तो इस समय इसके पास क्या है, बहुत सारा न्यूट्रिशन. तो ये क्या करता है, सारा न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करके मल्टीपल क्या बना लेता है, न्यूक्लियस, एक ही पेरेंट सेल में. और ये सेल क्या हो जाती है, स्वेल्ड अप हो जाती है, हैविंग दैट मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियस. अभी क्या हो गया, अभी बस इसको क्या होना है, बर्स्ट होना. और वहीं पे लिवर में आपकी कौन सी स्टेज आती है, जब आपको बहुत चिल्ड फीवर आने लगता है ना. ये भी पूछा जाता है कौन सी स्टेजेस में आपको फीवर एक्चुअली समझ आता है. अभी इसके नंबर, सपोज दैट अगर मान लो 5, यस ओके श्योर, नो इश्यूज. सो दैट व्हाट इज हैपनिंग, एनी प्रॉब्लम अवंतिका? Okay, so what is happening है, यहाँ पे एक सेल में there's a multiple nucleus, actually multiple nuclei has been formed, है ना. अब जब इसको एक्चुअली इसने न्यूट्रिशन प्रॉपर एब्जॉर्ब कर लिया, अब इसके पास न्यूट्रिशन लेने के लिए जगह नहीं है, देन इट विल गो जस्ट बर्स्ट अप. अब वो जब बर्स्ट होगी तो बहुत सारे न्यूक्लियाई साइमल्टेनियसली साइटोप्लाज्म के साथ डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है. दैट इज योर इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ दैट लिवर, इसी को बोलते हैं साइटोजोंट स्टेज. समझ आ गया. प्लाज्मोडियम का एग्जांपल है आपका मल्टीपल फिजन, उसी को हम लोग बोलते हैं साइजोगोनी. Getting my point? इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है, इसमें न्यूट्रिशन अवेलेबल है. सो दैट न्यूट्रिशन इज टेकन बाय द मल्टीपल न्यूक्लियस. और वो इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंशियल स्टेज. नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, एक न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, बट हियर इट इज नॉट अकरिंग. मल्टीपल टाइम्स karyokinesis process is occurring, but cytokinesis was later on followed by that. Okay, श्रीराम समझ आ गई पक्का? Syncytial इसको बोलते हैं, that stage is called that multiple nucleus in that single cell. It is generally very rare, है ना. When we talk about that कोकोनट का वाटर, वहां पे भी शायद ये होती है आपकी, हाँ, बट वहां पे भी फ्री एंडोप्लाज्म बनता है इस तरीके से, लाइक मल्टीपल न्यूक्लियर, मल्टीपल टाइम्स न्यूक्लियर डिवाइड. ये समझिए रास्ते यस उसका हाँ, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग. क्योंकि देखो जब आपके पास सपोज दैट आप एक जगह गए, है ना, यू हैव सो मेनी थिंग टू जस्ट कैप्चर, यू विल कैप्चर. उस समय आप ये थोड़ी देखोगे कि सपोज दैट आप एक जगह गए, वहां पे बहुत सारे पैसे पड़े हुए, है ना, तो आप उसको क्या करोगे, बस बैग में फिल इन करोगे. जब आप घर जाओगे तब उसको आप प्रॉपर मैनर में एस्टैब्लिश करो. दैट्स द प्रोसेस, ठीक है. जब न्यूट्रिशन है तो उसको ले लो, उसी समय आप साइटोप्लाज्म डिवाइड करोगे, दैट विल गोना टेक लॉन्गर टाइम. एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फोकस क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फोकस क्या है, टू इंक्रीज इन देयर नंबर, टू फॉर दैट सर्वाइवल. बस में दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग. ऑब्वियसली मल्टीपल न्यूक्लियस हो जाएंगे तो बस तो करेगी अल्टीमेटली. नहीं भी अगर सपोज दैट मल्टीपल न्यूक्लियस होते, बट जमशद वी कैन नॉट टेल दैट कि दैट इज गोना हेल्पिंग. अगर नहीं भी होता तो भी साइटोकाइनेसिस प्रोसेस तो होती है ना आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस, ठीक है. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प जस्ट दैट, राइट नो. साइटोकाइनेसिस वही तो साइटोकाइनेसिस हो रही है, वही तो मैं कह रही हूँ. वही
बर्स्टिंग इज जस्ट कि वो हेल्प कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे नंबर उसने एक साथ भर रख रखे, तो वो जस्ट हेल्प कर रहा है। वही तो मैंने बोला कि अगर नहीं भी हुआ होता तो भी साइटोकाइनेसिस तो मस्ट फॉलोड बाय द कैरियोकाइनेसिस, अदरवाइज वो सिंथेसियल एपिडर्मिस एस्केरिस की सिचुएशन रह जाती। नंबर्स को क्या करने, अल्टीमेटली नंबर्स इंक्रीज करने हैं ना, सो दैट्स हाउ द नंबर इज गोना इंक्रीज। ओके, चलो राइट ऑन, सही तो बोल। अब मैम फिर यस बच्चा। मैम जब ये सेंसेशियल स्टेट बर्स्ट होती है तो उसके बाद न्यूक्लियस के ऊपर साइटोप्लाज्म होता है या सिर्फ न्यूक्लियस से आगे फ्लो करते हैं? नहीं नहीं, अरे यार थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म सबको मिलेगा, है ना, रिच है साइटोप्लाज्म का ये बहुत, सबको सबको थोड़ा बहुत साइटो लेयर फॉर्म में निकलता है। ऐसा नहीं होता है कि बस फरो यहाँ पे भी बन रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस निकलेंगे तो कैसे काम चलेगा। मीन्स फिर न्यूक्लियस के ऊपर फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। हाँ ऑब्वियसली होती है लेयर साइटोप्लाज्म के साथ इन लोग बस, इसलिए कैसे ऐसे इसको बहुत अगर सुंदर डायग्राम में मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये आपका डायग्राम, दिस इज द वन न्यूक्लियस, ठीक है, बना लो डायग्राम भी, ठीक है। मल्टीपल स्टेज में देयर इज अ मल्टीपल न्यूक्लियस, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है इसके पास, अब सपोज दैट साइटोकाइनेसिस हो रही है, दैट इज अ साइटोकाइनेसिस, मल्टीपल फरो इज गोइंग टू बी फॉर्म, तो उसके साथ ही तो निकल रहा है, देखो, यस मैम। ठीक है। दैट इज द डायग्राम ऑफ योर मल्टीपल फिजन। हाँ, जो दूसरा है ना, जो दूसरा जब पैरामीशियम में कंडीशन होती है तो वी कॉल दैट स्पोरोगोनी। जो हमने अभी जस्ट हेडिंग हमने एक नॉर्मल लाइन लिखी है, दिस प्रोसेस इज टेक्स रिसीव्स द नेम, तो एक नेम है उसका साइजोसॉन्ट स्टेज, सेकंड नेम उसका स्पोरोगोनी है, सिमिलरली स्पोरुलेशन, दैट्स द प्रोसेस, मल्टीपल स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। चलो राइट ऑन। मैम ये साइजोगोनी की डायग्राम है? ये मल्टीपल फिजन का डायग्राम है बच्चा, ओके मैम। है ना, एक सेल मल्टीपल न्यूक्लियस मल्टीपल डॉटर न्यूक्लियर। हाँ हाँ बना लो। ये कुछ नहीं लगता ये, मैम यस मैम ये जो साइजोगोनी है ये एक प्रोसेस है मल्टीपल फ्यूजन में या स्टेज है? एक प्रोसेस है, साइजोसॉन्ट स्टेज आती है आपकी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में, व्हेन प्लाज्मोडियम पैरासाइट एंटर्स इन द लिवर ऑफ द ह्यूमन, दैट स्टेज इज कॉल्ड द साइजोसॉन्ट स्टेज। मल्टीपल फिजन का एक टाइप, एक तरीके से टाइप है, ठीक है। ओके हाँ स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि लिवर में हो रहा है। दूसरा होता है स्पोरोगोनी, वो पैरामीशियम में होता है, तो उसके मल्टीपल नेम्स दिए गए, दैट्स इट। मतलब कि अगर साइजोगोनी आएगी तो हम इसकी डायग्राम बनाएंगे? प्लाज्मोडियम का यही डायग्राम बनाओगे, प्रोसेस सेम है, बट वो ओके लिवर में हो रही है तो हमने अब देखो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, पैरामीशियम फ्री लिविंग है, यस मैम। दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट नेम्स। ओके मैम। डन एवरीवन। स्पोरोगोनी, सेकंड स्पोरोगोनी, सेकंड स्पोरोगोनी। तो
मैम इसमें कोई डिफाइन वगैरह नहीं थी साइजोगोनी के अंदर? नहीं 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 नहीं, नो नीड, नॉट एट ऑल। बस ये डायग्राम बनाना है। साइजोगोनी का डायग्राम नहीं है बच्चा, वो डायग्राम मल्टीपल फिजन का है। ओके। हाँ, एक उसमें मल्टीपल फिजन हो रहा है। Sporogony also found in the plasmodium. Also found in the plasmodium. It takes place. It takes place after. Also form. It also found in the plasmodium. इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद की स्टेज भी होती है ये, क्योंकि स्पोर्स जो होते हैं प्लांट्स में भी होती है स्पोरोगोनी स्टेज। ठीक है, इट ऑल्सो फाउंड इन द प्लाज्मोडियम। इट टेक्स प्लेस आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, after the sexual reproduction for sporozoites, for sporozoites, for the formation of multiple spores for the next generation, ठीक है। तो हमने कितने टाइप लिख लिए? हमने बाइनरी फिजन लिख लिया, हमने मल्टीपल फिजन लिख लिया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो जब भी आपके क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द मेथड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआंस, तो ये सारे आपको लिखने जरूर है, भले आप इसको कंसाइज फॉर्म में लिखो, बट यू हैव टू हैव एड्रेस दैट। ठीक है, थर्ड लिखो प्लाज्मोटोमी, ये थर्ड टाइप है, बाइनरी, मल्टीपल एंड देन प्लाज्मोटोमी। ठीक है, प्लाज्मोटोमी। It takes place in opelina के एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है आपका ओपेलाइना। एक और एग्जाम्पल होता है पेलोमाइजा, आई एम नॉट श्योर मैं सही नाम ले रही हूँ या नहीं, पेलोमाइजा, ये दूसरा एग्जाम्पल है पेलोमाइजा। नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस अब ये नॉर्मल है। अगर सपोज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ रहा, दो इसका एग्जाम्पल लिखो, 2 लाइन लिखो और आगे बढ़ो, नेम लिखो, एग्जाम्पल लिखो, 2 लाइन लिखो और आगे बढ़ो। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा एलाबोरेशन अब नहीं है, मेनली आपका ट्रांसफर्स और बाइनरी फिजन ही आपका इंपॉर्टेंट है इन दैट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, बट नाम जरूर मेंशन करना है। अगेन, इन दिस प्रोसेस द मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन्स division occurs into two or more daughter multinucleated individuals. It is a unique form of the asexual reproduction. It is a unique form of asexual reproduction. Next point. In this multinucleated cells, in this multinucleated parent cell found which have already more than one number of nucleus. हाँ, इसमें पेरेंट ही मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, more than one number of nucleus present even before the division of the single cell, even before क्या छूटा? more than one number of nucleus
are present, more than one number of nucleus are present even before the division of single cell. Even before the division of single cell. Just cut it, Daksh. Do not need to do that. Just cut it and आगे बढ़ो. ठीक है? Next point. Single cell. Next, nuclei. Nuclei do not divide. Nuclei do not divide during the process of asexual reproduction. During the process of asexual reproduction, while the cytoplasm divides. While the cytoplasm divides, which is followed by different number of nucleus in each cell. Different number of nucleus in each cell. Different number of nucleus in each cell. देखो प्लाज्मोटोमी क्या होता है या ओपेलाइना क्या होता है? ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. व्हाट इज हैपनिंग हियर? सपोज दैट दिस इज अ पेरेंट्स. ठीक है? Opellaina has the CD also. Suppose that this is a parent. So in general, what we know, the one nucleus in that one single cell, right? They do not have this kind. Plasmotomy occur actually, इसमें multiple nucleus already present होता है. ठीक है? और reparent में ही multiple nucleus present होता है. So nucleus is not gonna be divided. That means multiple nucleus present है. That means information is not present in specific kind of cell, specific kind of nucleus. तो इसमें क्या होगा? Depending on the condition. अगर बहुत हार्श कंडीशन है तो अल्टीमेटली व्हाट इज द मेजर फंक्शन, व्हाट इज द मेजर थिंग फॉर द एनिमल? एक होता है एनर्जी कंजम्पशन इन देयर बॉडी साइज, है ना? एक होता है एनर्जी कंजम्पशन इन देयर रिप्रोडक्शन. अब ये सिंगल सेल है, कितना ही बॉडी साइज इंक्रीज कर लेंगे. तो अब ये अगर बहुत हार्श कंडीशन है तो मल्टीपल डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स और स्मॉल सेल जाएंगे. अगर ठीक ठाक कंडीशन है तो सिंपल यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. सपोज दैट किसी में 4 गए, किसी में 2 गए, किसी में 3 गए. न्यूक्लियस इज नॉट गोइंग टू बी डिवाइड. दैट्स अ सिंपल प्लाज्मोटोमी. प्लाज्मा मतलब अंदर वाला मटेरियल. तो प्लाज्मा का डिवीजन हो रहा है, राइट अनुष्का? वी गेट इट ना? नो नीड टू डिवाइड दैट न्यूक्लियस. सिंपल डिवाइड दैट व्हाटएवर द प्लाज्मा इज देयर डिपेंडिंग ऑन दैट कंडीशन. अगर बहुत हार्श है तो मुझे ज्यादा लोग चाहिए प्रोटेक्ट होने के लिए. सपोज दैट द 10 पीपल, कुछ सर्वाइव करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. अगर ठीक ठाक कंडीशन है तो 2 से 3 बन जाएंगे. ठीक है? बस मिक दैट. इसमें यहाँ पे लिख लेना साइटोप्लाज्म डिवाइड. तो ये कंडीशन पैरामीशियम में होगी प्रिया? दिस कंडीशन कैन अकर इन द पैरामीशियम? यस और नो? अनिकेत, दिस कंडीशन कैन अकर इन पैरामीशियम? यस और नो? अवनीता, नवनीता, विचिता, रजिया, दिस कंडीशन कैन अकर इन पैरामीशियम? No, ma'am. ओके, यस ऑब्वियसली नो. यस कैसे प्रिया? 2 ही तो न्यूक्लियस है ना? दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड मल्टीपल न्यूक्लियस, तो नहीं होगी, है ना? दैट्स व्हाई स्पेसिफिक है ओपेलाइना एंड पेलोमाइजा. मैम यस मैम अगर हार्श कंडीशंस होंगी तो इनका नंबर इंक्रीज कर सकता है. हाँ, मतलब सपोज दैट अभी कितने डिवीजन है? 1 2 3 4 5. मैम ये यूनिन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं कि इसके जो डॉटर सेल्स हैं उनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है? कैन बी, कैन नॉट बी. वैसा कुछ नहीं है, इतना रिड्यूस नहीं करते ये नंबर, बिकॉज न्यूक्लियस इज एक्चुअली द स्टोरेज.
of the required thing to survive in the harsh condition. So एक पे तो reduce नहीं, अगर एक खत्म हो जाएगा तो वो budding खत्म, वो organism ही खत्म हो जाएगा ना. तो एक पे तो extreme condition क्यों जानी है भाई, normal रहते हैं ना. ठीक है, चलो लास्ट देखो. नेक्स्ट प्लाज्मोटोमी के बाद. यस यस श्वानी. मैम आप एक बार ये रिपीट कर दो, मतलब हार्श कंडीशन में किस तरह डिवाइड होंगे और नॉर्मल कंडीशन में. अच्छा, सपोज दैट इफ द कंडीशन विल बी वेरी हार्श, है ना, बहुत ज्यादा खराब है ना, सो व्हाट दे वांट टू डू, सपोज दैट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशन है, सो एटलीस्ट इफ देयर आर द 10 नंबर ऑफ पीपल, सो देयर आर चांसेस कि 10 में से कुछ तो बच जाएंगे, राइट. सपोज दैट इन 10 में से एटलीस्ट 3 to 4 तो रिमेन होंगे ही होंगे, राइट. we can in a normal theory, Yes, ma'am. so like anyone at least कुछ तो सेव होगा. that is the concept of the J shaped curve ना, the microorganism and that lower organism and that bigger organism. हम लोग जो पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो छोटे organism होते हैं they invest their energy in the reproduction, क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन कम होती है ना. अभी वो पैर के नीचे आके मल्टीपल नंबर्स they can be dead. ठीक है, तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट बिकॉज दे ऑलवेज, हमारे लिए हार्श कंडीशन का मतलब बहुत एक्सट्रीम है. फॉर द ह्यूमन द हार्श कंडीशन शुड बी वेरी एक्सट्रीम, बट फॉर सपोज दैट द लार्वा ऑफ द प्लाज्मोडियम और मे बी टैडपोल और छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए हार्श कंडीशन कुछ भी हो सकती है, राइट. सो व्हाट दे इन्वेस्ट इन देयर एनर्जी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके नंबर ऑफ बेबीज ज्यादा होते हैं. जैसे कि कंसीडर एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट या सिल्क वॉर्म या एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट जो छोटे, they reproduce in a single time at least 400 to 500 eggs. क्यों करते हैं वो इतनी एनर्जी देयर रिप्रोडक्शन में इन्वेस्ट, कि नहीं 400 सर्वाइव होंगे तभी भी 200 तो सर्वाइव हो ही जाएंगे, राइट. Yes, ma'am. That's the same concept apply here. But human 9 month में 1 baby, elephant 11th to 12th month में 1 baby. Means first we invest their energy in the body, then we invest our energy in that reproduction. ठीक है, similar concept apply here. अगर अच्छी कंडीशन ऑब्वियसली दे इंक्रीज देयर बॉडी साइज. इफ द हार्श कंडीशन इज द नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई विल गोना बी इंक्रीज, सो दैट अगर 5 है तो कम से कम 2 इज गोना बी सर्वाइविंग. ओके, नॉर्मल कंडीशन है तो 5 की जगह क्या पता 3 ही बने, मे बी देयर फॉर्म ओनली 3 ऑर्गेनिज्म, दैट्स द थिंग. ओके मैम न्यूक्लियस का यहाँ पे क्या काम है? न्यूक्लियस का जहाँ बेसिकली जो ही काम होता है वही काम है अंजलि. यहाँ पे न्यूक्लियस का इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी वही है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बट दे आर नॉट दैट इवन स्पेशलाइज्ड वन. दे आर द वन ऑफ दैट प्रिमिटिव प्रोटोजोन्स में भी बहुत. ओपेलाइन इज वन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म जो पैरामीशियम से भी पहले फॉर्म हुआ, सो दैट देयर इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली प्रेजेंट इन एवरी पार्ट. जैसे हमारी बॉडी है, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड अंजलि. तो हमारी बॉडी में अगर न्यूक्लियस में थोड़ा भी एक ही जगह बाई मिस्टेक सामने जी भी लग जाए तो it will provide a very big change, right? Yes, ma'am. But इनके साथ इतना complicated body नहीं है, so इनके पास nucleus की जो information है that can be present in separate multiple form, because they are not containing very core information, very critical information. They are not having that. That's why the unicellular getting modified into the multicellular and so on and so on. That's what the evolution occurs, isn't it? Okay, ma'am. चलो next, budding. 4th ही होगा आई थिंक, 4th है ना. चलो ये तो सबको पता ही है, वर्डिंग पता है ना. Yes, ma'am. अपने आप लिख लो फटाफट. हाँ गुड, लिख लेंगे ना. लिखो अनिकेत, लिख लेंगे ना. लिखो 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 कॉपी में लिखो. I'm giving the 2 minutes. Everyone just write by yourself. After that, I'll dictate. Basic things. Sometimes it happens कि हमें concept पता होते हैं, but we need to also form in the statement. I'll dictate, but first write. Budding में क्या हो रहा है? A simple bud-like structure emerges from any part of the body and gradually it enlarges and then it is split out and form the complete organism. That's the core concept of the budding. Write it. लिखो श्रीराम. प्रॉपर लिखना है भाई, ऐसे 2 स्टेटमेंट्स में नहीं लिखने हैं. राइट एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स. मैंने 10 मार्क्स का आंसर बोला है. थिंक ऑफ मोर. दक्ष, ऑफ कोर्स आई विल डिक्टेट, बट थिंक ऑफ मोर.
Yes. Gemmules and birds. No. Both are the sexual reproduction, but both are the different. Gemmules are kind of spores. Kind of. वो इंसिस्ट होते हैं फिर वो लिबरेट होते हैं. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इंसिस्टेंस जैसा कुछ नहीं है. The symbol outgrowth of the body. No issues. I'll dictate. Relax. No issues. That's the first time. ऐसा कुछ burden नहीं है. ठीक है? That's what we learn in the class. Very chill. चलो. चलो, write down. जितना लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है, ठीक है. It's simple कि आप लोगों का जो concept है वो आप copy पे कैसे लिख पाते. Write down. It is a method of asexual reproduction. It is a method of asexual reproduction in which the formation of one or more small individual outgrowth occur in the parent body. Outgrowth occur in the parent body. Takes place which is known as bud. Which is the future of the separate daughter cell. Future of separate daughter cell. Full stop. Next point. Each bud carries a part of the parent nucleus. Each bud carries a part of parent nucleus and form a complete organism. As the size मैम as के बाद as the size start growing gradually, comma, with remaining intact of the parent body, full stop. After some time, next point, after some time, when this bud grows enough, it gets separated from the parent body. And form a complete new organism. Next point. Generally, such daughter nuclei through budding is smaller than the parent organism. मैम daughter nuclei to From
क्या लिखा दक्ष, रिपीट दैट. Generally, such daughter nuclei तुम्हारी कॉपी देना. Generally, such daughter nuclei through budding is smaller than the parent. Smaller than the parent organism. Yes, cell. कुछ भी लिखो. Parent organism. Last point. It may differ. It may differ on the basis of number of bud formation, such as when only one bud form, such as when only one bud form, it is known as monotonic. It is known as monotonic. Example. हाइड्रा क्या है बेटा? मुझे पता था someone is gonna say that हाइड्रा प्रोटोजोआ है. हाँ. Example, Verticella. While when the multiple budding form through the different parts of the body, it is known as polytonic. Polytonic simultaneously मतलब one by one नहीं है, simultaneously. Example, Noctiluca. and Tocophyra. ठीक है, समझ आ गया? तो दैट अभी तक कहीं पे भी फ्यूजन वीजन कुछ नहीं हो रहा है, अभी तक सिंपल कुछ ना कुछ. इसमें क्या है? सपोज दैट दिस इज नॉक्टिल्यूका. ठीक है, यहाँ से एक बर्ड स्टार्ट हुई फॉर्म हो. ठीक है, अब वो धीरे धीरे इसका कुछ मटेरियल. सो अगेन दे आर द यूनिसेलुलर. They do not contain very specific kind of information, so that if something is missing, they are gonna be die or something like gonna be happen. Okay, so they contain a small part of the nucleus thing. That's it, and gradually it enlarges, and after that separate out, and they're forming the bee. That is a monotonic. और polytonic क्या होगा? Simultaneously, एक ही टाइम पर. Suppose that यहाँ से भी और यहाँ से. अब ये भी enlarge हो रही है, ये भी enlarge हो रही है, और ये भी enlarge हो रही है. ठीक है, अब साइमल्टेनियसली 3 सेपरेट बॉडीज फॉर्म. दैट इज कॉल्ड पॉलीटोनिक. ओके, मेक द डायग्राम. जरूरी नहीं है मेरा वाला डायग्राम बनाओ. माय डायग्राम इज नॉट वेरी, है ना अनुष्का? चलो, कोई भी नॉक्टिल्यूका का डायग्राम होता है. आई डू नॉट रिमेम्बर नॉक्टिल्यूका. मुझे फैसियोला हेपेटिका का लार्वा याद आ रहा है नॉक्टिल्यूका के नाम पे. कुछ भी बना लो यार, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, सपोज दैट दिस इज द न्यूक्लियस. ठीक है, सो इन जनरल यहाँ से क्या हो रहा है? द स्टार्ट ऑफ दैट बॉडी ग्रोथ. ठीक है, यहाँ इसका कुछ मटेरियल विल स्टार्ट गो हियर. ग्रेजुअली दिस साइज इज गोना बी इंक्रीज. ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस. इसका कुछ पार्ट उधर चला जाएगा, और एक ही ऑर्गेनिज्म हो गया और एक ही ऑर्गेनिज्म. 2 दोनों के पास न्यूक्लियस हो. 2 डॉटर इंडिविजुअल. ओपेलाइना का तो पता है. नॉक्टिल्यूका आई थिंक सीलिएटा ये भी होता है. नॉट श्योर वेरी. इट जस्ट यू हैव टू शो द डायग्राम. दैट्स इट. एवरीथिंग इज गुड. यू वांट टू लीव? कोई इशू नहीं, आप जस्ट. थैंक यू. Avantika, you want any kind of help?
What happened? You okay? But I You- really like the class. No, no, that's not the thing. I'm not even asking you. Or something. I was like, I'm having period or something. You want tag or something? No, I have. I just. Okay. I thought this is the problem. Yeah, everything is in No, place. no issues. Just go and relax. Okay? No issues, Avantika. It's completely fine. I was just came to ask you, you're okay or not. Relax, relax. Go. No issues, Baba. Let's go. Take care of yourself. चलो नेक्स्ट एक लिख लो और प्लाज्मोगेमी लास्ट बडिंग के बाद प्लाज्मोगेमी देखो प्लाज्मोटोमी में क्या समझ आ रहा था व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग विद द प्लाज्मोटोमी yes that means plasma जो मटेरियल था that was dividing and forming that multiple प्लाज्मोगेमी में क्या समझ आ रहा है यस अनुष्का मैम yes. प्लाज्मोटोमी में हमने फ्यूजन देखी थी, इसमें फ्यूजन आ रहा है. हाँ काइंड ऑफ टोमी जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट दैट ऑटोटोमी मींस सेल्फ डिवीजन राइट टोमी मींस होता है डिवीजन प्लाज्मोगेमी में प्लाज्मा विल बिहेव लाइक द गैमीट्स ठीक है राइट ऑन प्लाज्मोगेमी in such individual two or more parent cell two or more parent cells or the plasma of the single cell fuses and form the daughter nuclei where the nuclei will remain remain distinct and they separate again remain distinct and they separate again after the unchanged material next point simply the fusion of the cytoplasm of two or more individual cells without the immediate fusion of their nuclei which result in the multinucleated cells immediate fusion of their nuclei which result in the multinucleated cells which may later undergo the division without exchanging their material example rhizopoda देखो what is happening here okay actually plasmogamy is the initial stage of the plasmotomy what was happening in the what was the condition of the plasmotomy
मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल विद इन अ सिंगल सेल, बस ये कंडीशन भी बना रहे हैं। देखो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, सपोज दैट प्लाज्मोगोमी में क्या हो रहा है, कभी कभी एक सेल का जैसे प्रॉपर साइटोप्लाज्म इट गेट सेपरेटेड, इधर उधर हो जाता है, ठीक है, इधर उधर जाता है ऐसे ऐसे करके, या तो फिर क्या होता है प्लाज्मोगोमी में द टू पर्टिकुलर पेरेंट सेल ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। अब फ्यूज करेंगे मैम तब तो फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, है ना। बट यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी डू टॉक अबाउट द फ्यूजन ऑफ देयर गैमीट, specifically the nucleus which is carrying the genetic information or the material। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये दोनों आगे कंबाइन हुए, इसके पास भी न्यूक्लियस था, इसके पास भी न्यूक्लियस था। बहुत ही रेयर कंडीशन होती है प्लाज्मोगेमी की, जब सब उनको पॉपुलेशन बढ़ानी नहीं है, दे जस्ट वांट टू डू ऐसे नॉर्मली, ठीक है। अब ये कंबाइन होके एक बन गया, अब कंबाइन होके इसमें न्यूक्लियस मल्टीपल बनेंगे और अब यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाए, कहीं से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। दैट्स अ थिंग। प्लाज्मोगेमी इज वन ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन, ठीक है, दैट्स इट। They fused but their nucleus did not fuse, just there's a material, what is fusing is just plasma is behaving like the gamete, that's a plasmogamy, है ना। They become one and one के बाद ये condition आ गई, then they become separate out again। Actually, you know what? Plasmogamy is the start of the sexual reproduction, ठीक है। इसी के बाद और कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में अगर इन्हीं के बाद अगर न्यूक्लियस भी फ्यूज करने लगता तो यहीं पे क्या हो जाता, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता। ये समझ कॉन्जुगेशन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। हाँ, ट्यूब के थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है ना, उसके थ्रू आपका किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में न्यूक्लियस का फ्यूज होना जरूरी है, उसके गैमीट का फ्यूज होना जरूरी है, बिकॉज न्यूक्लियस इज कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन इवन इन द प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, है ना। ब्लड को फ्यूज करने से, ब्लड आपका बॉडी मटेरियल है, उसको फ्यूज करने से कुछ नहीं हो रहा, न्यू रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, है ना, एक्सेप्ट कि वो हॉलीवुड की कोई मूवी है ना, कि एक ब्लड से मल्टीपल ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, एक्सेप्ट दैट अदर रियल वाइज प्रोसेस में ब्लड फ्यूज होने से कुछ नहीं बन रहा, राइट। द प्रॉपर फ्यूजन शुड बी ऑफ दैट न्यूक्लियाई, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। Yes, Anjali, Ma'am, you're saying something. प्लाज्मा Don't use the theme of the Hollywood movie. I do not know that. Okay, don't. ओके मैम। मैम इसमें तो प्लाज्मा फ्यूज, Just a minute, Anjali. Just wait a minute. डायग्राम में दो फ्यूजन हो रहा है, तो देन उसके बाद सिंगल में दो न्यूक्लियर, देन आफ्टर डिवीजन। हाँ, that's it. It's not very favorable. Plasmogamy is not very favorable condition. ठीक है, बहुत नंबर नहीं बन पाते इससे. Very less number. Yes, Anjali, go on. मैम प्लाज्मोगेमी में तो प्लाज्मा फ्यूज करता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस का नंबर क्यों इंक्रीज कर रहा है? डिवाइड करेंगे, उनका मतलब है उनको डिवाइड करने का, बस मन है उनका कैरियोकाइनेसिस करने का। अब अगर दो से बन के एक बना, फिर इससे दो ही बने, तो मतलब क्या हो रिप्रोडक्शन का? रिप्रोडक्शन मींस रिप्रोड्यूस, नंबर उनका दोबारा बनना, है ना। तो दे आर नॉट बिहेविंग लाइक दैट इंटरनली, उनका कोई मतलब कि इसमें पहले फ्यूजन हो रही है साइटोप्लाज्म की, बाद में ये कैरियोकाइनेसिस कर रहे हैं। हाँ, फिर साइटोकाइनेसिस फिर से कर रहे हैं। ओके मैम। बट फ्यूजन गैमीट का नहीं हो रहा है, जस्ट रिमेंबर दैट. That is why plasmogamy, do not get confused. Plasmogamy is not the sexual reproduction. Actually, plasmogamy is, you can say that start of that evolution में sexual reproduction का, है ना? You can say the transition state, but it is not the sexual reproduction. चल, make that in sexual reproduction. This is a process. This is a process in which the production of new organism slash daughter nuclei occurs by fusion slash
combination of by fusion slash combination of genetic information of two individuals or two nuclei of two individuals or two nuclei either within the same parents or or different parents This is done by various method. First, Syngamy. प्रिया समझ आया है क्लास का ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा? ठीक है, सरप्राइज टेस्ट वैसे इस टॉपिक कर लेंगे, है ना? देयर विल बी सरप्राइज टेस्ट ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक. ओके, मेटामेरिज्म तो लेंगे ना, आज प्रणव नहीं आया वरना आज ही लेते. ठीक है, कर लेंगे अभी. चलो, क्यों नहीं आना प्रणव? श्रीराम, डिड यू टॉक? ठीक है, ट्यूसडे को आएगा ना? ठीक, चलो, राइट डाउन. Syngamy. Here, the complete fusion of two different parent nuclei occurs. Or the fusion of two different cells or the fusion of two different cells behaving like two different parent cells, comma, resulting in the formation of zygote, occurs after the fusion of material of the two nucleus. After the fusion of material of two nucleus. Next point. The fused nucleus of the zygote is known as synkaryon, comma, underline that everyone, that synkaryon, depending on the size and the degree of differentiation, the size and the degree of differentiation of these two cells, Syngamy classified into three types. पेज में ऐसे ही लिखना. Sure. Hologamy, isogamy, and isogamy.
होलोगे में लिखो, two normal mature protozoans, two normal mature protozoans behave like gametes, and fuse together to form the zygote, example, इसमें लिखो example, sarcodines and mastigophores, ठीक है। आइसोगेमी में लिखो, fusion of two different cells, but which are similar in shape, and size, example monocystis, ठीक है। अनाइसोगेमी में लिखो, राइट ऑन, the fusion of two cells which are unequal in size, but behaving like the two different parent cells, or gametes, so stop. In this one, The two different. gametes. Here, one, the smaller. Here, in this one, the smaller cell or gamete. Here, the one smaller cell / gamete, which are motile, behave like male gamete, while the large and non-motile behave like female gamete, एनाइसोगेमी का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका पैरामीशियम। यस, वेरी गुड। पैरामीशियम, जब भी आप अगर सपोज दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा जा रहा है, सो यू कैन स्टार्ट विद आल्सो द एनाइसोगेमी, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम एनाइसोगेमी में एक छोटू सेल होगा और एक बड़ा सेल होगा, है ना, ऑब्वियसली विद द सेम स्पीशीज, बट वन द स्मॉलर वन बिहेविंग लाइक द, इसका जो माइक्रो न्यूक्लियस होगा दैट विल एंटर, है ना, और इसके पास माइक्रो की साइज होगी बट थोड़ी सी बड़ी होगी। You know that the male nucleus is generally smaller, right? And which are the motile one too. चलो, next make the heading. सबके एग्जाम्पल हमने लिखे हैं ना? Yes, ठीक है। चलो, सिंगेमी पे भी आपका शॉर्ट नोट है फॉर सर्विसेज में, श्रीराम, ठीक है। So we do have that enough content, सिंगेमी है क्या significance है, and that's everything. इसको थोड़ा सा elaborate form में लिखते हैं। Right on. Second process is the conjugation. Right on. In this process,
there is a formation of conjugates occur. There's a formation of conjugate occurs, which are the two different parent cells or organisms with the different or similar sizes which fuses with each other and exchange their nuclear material as this is a process of sexual reproduction. Last point. This is a characteristic feature of the ciliates Ciliate is one of the ciliated class है ना, हमने करा है ciliata, flagellata है ना. Ciliates ब्रैकेट में लिखो. Heterotrichous different जिनके वो होते हैं. Heterotrichous ब्रैकेट क्लोज, which takes between the two individuals, of the same species, but with different mating types. Example, paramecium. ठीक है. स्टार बना के, डबल और ट्रिपल स्टार बना के लिख लो, हेडिंग डालो, which will continue tomorrow. Conjugation in paramecium. ठीक है, ये क्वेश्चन very very important. Conjugation in paramecium. ठीक है, rest we'll do in the next class. मैम Yes बच्चा. मैम heterotrichous क्या होता है? डिफरेंट लेवल के जो सीलिया का स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है. जरूरी नहीं है कि दोनों आपके मतलब सिमिलर ही टाइप के हो, अलग अलग टाइप के हो सकता है. हीट्रो मींस जहां पे भी होगा एक्चुअली यहाँ पे सीलिया से रिलेटेड है. ओके मैम. चलो, let's see you in the next class. Thank you.